So, good morning, class. Now we'll be discussing the comparison of the two, and then we'll be discussing whether the organization should integrate these two approaches or should go with particular one approach. Okay. So, if we compare of the two approaches, the problem driven and the data driven approach, then you know that problem driven it started with some specific issue. There was some issue or challenge, while the data driven started without any problem. There was no pre problem, and the data analysis it was just started with to gain some insights. ठीक है? Then next difference is reactivity and proactivity. You know that problem driven approach was a reactive approach as it was being implemented when there was some issue or challenge with the organization. Okay, and data driven it is a proactive approach where it is being used to leverage data to get some information in order to make some strategic decisions for the time ahead. Okay, तो प्रोएक्टिव है कौन सा प्रोएक्टिव है डेटा ड्रिवन क्योंकि वो पहले से किसी अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में मतलब डेटा एनालिटिक्स को यूज कर रहा है हाउएवर प्रॉब्लम ड्रिवन जो है वो रिएक्टिव अप्रोच है स्कोप ओके इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप देन यू नो प्रॉब्लम ड्रिवन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आ रहा है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर वो खत्म हो जाएगा तो ये क्या है एक नैरोअर इसका फोकस जो है वो एक नैरो फोकस है हाउएवर जो डेटा ड्रिवन अप्रोच है वो क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ है तो इट हैज अ वाइडर रेंज टू कवर इन ऑर्डर टू गेन सम अपॉर्चुनिटी और address some challenges beyond the initial scope. Okay, if we talk about the innovation potential, then you know that problem driven approach, you know, it is essential because, like for example, COVID, कोरोना का टाइम कोरोना पेंडेमिक का जो टाइम हुआ उस टाइम वो इशू एकदम से आ गया तो एकदम से जो इशू आ गया है उसको सॉल्व करने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच का ही यूज करना पड़ेगा बिकॉज द डेटा ड्रिवन अप्रोच विल नॉट हेल्प क्योंकि वो काफी लॉन्ग टर्म में काफी ब्रॉडर वे में कवर कर रहा है ऑल दो आप मानो डेटा एनालिटिक्स यूज हो रहा होगा बाय ऑल द इकोनॉमीज बट आपको पता है ना पेंडेमिक ने हर इकोनॉमिक को हिला दिया है ना लाइक यूएसए इटली एंड ऑल दीज द यूरोपियन कंट्रीज ऑल वेयर अफेक्टेड तो क्या आपको क्या लगता है वो डेटा ड्रिवन यूज नहीं कर रहे they were using data analytics but then in order to solve that particular problem the organization need to use the problem driven तो problem driven भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि organization बिल्कुल ना यूज करे तो in order to like address a particular problem जो एक short period में problem आया और उसको फटाफट solve करना है तो उस issue में तो आपको problem driven ही यूज करना पड़ेगा however data driven approach जो है वो इनोवेशंस या रिसर्च में ज्यादा काम आता है रीजन बीइंग कि डेटा ड्रिवन जो रहता है वो लॉन्ग टर्म रहता है जहां लॉन्ग टर्म डेटा बिग डेटा सेट्स कलेक्ट होता है और ज्यादा से ज्यादा उस पर एनालिसिस होती है बियॉन्ड सम सर्टेन गिवन गोल है ना कोई गिवन गोल या कोई गिवन चैलेंज नहीं है ये बियॉन्ड ऑल काम करती है इसलिए इसमें इनोवेशन और रिसर्च के ज्यादा चांसेस होते हैं ओके सो द कंपैरिजन इज फर्स्ट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट द प्रॉब्लम ड्रिवन स्टार्ट्स विद सम इशू और चैलेंज reactivity is problem driven is reactive data driven is proactive then scope if we talk about scope then problem driven is a narrow focus and data driven is a broader focus if we talk about innovation potential then problem driven has least innovation potential because it has to address some problem and the data driven it is it can lead to more innovative solutions and opportunities as it is it is used to have some insights future insights right so thank you so much meet you in the next video bye bye